जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की एज ए प्रोसेस बात करते हैं तो इसका बेसिक पर्पस मूवमेंट ऑफ डीएनए और इन अदर वर्ड्स माइग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड होता है। अब हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो कौन से अवामिल हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ मूवमेंट या माइग्रेशन ऑफ द डीएनए की स्पीड को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट can affect the rate of migration of the DNA। इसमें DNA के हवाले से कुछ फैक्टर्स शामिल हैं, इसमें जेल के हवाले से कुछ फैक्टर्स शामिल हैं और बफर के हवाले से या जो करंट अप्लाई किया जाता है उसके हवाले से कुछ फैक्टर्स शामिल हैं। We have to look at the molecular size of the DNA। Molecular size, if the DNA is of having more weight or having higher molecular weight, its speed will be slow, and if it is of smaller molecular weight, its speed will be more to migrate from one pole to the other pole. The reason behind that is the friction which is offered to the larger DNA molecules during their movement, as well as the pore size of the gel, which is creating this friction or this resistance for the larger molecular side molecules। इसमें जब हम परसेंटेज डिसाइड करते हैं जेल की, जो परसेंटेज है दैट डिटरमिन्स व्हाट साइज ऑफ पोर दीज जेल्स विल हैव थ्रू विच द डीएनए मॉलिक्यूल्स विल पास। सो we have to look at the molecular size of the DNA which is under consideration or under study and have to decide that what percentage we should use so that minimum friction can be offered to the larger DNA molecules। दूसरी साइड पे आ जाते हैं कंसंट्रेशन। जैसा कि अभी बात की, कंसंट्रेशन मैटर्स अ लॉट। डिफरेंट कंसंट्रेशन, different DNA sized particle move differently। Then there comes the conformation of DNA। Conformation is a different thing as compared to the size। Conformation में हमारे पास तीन किस्म की conformation होती है DNA की। एक तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है in the form of a circular DNA molecule which can exist in the form of super coiled DNA molecule या super helical DNA molecule, और इसी फॉर्म को हम फॉर्म 1 कहते हैं। एंड इफ दिस सर्कुलर सुपर हेलिकल फॉर्म इज निक्ड बाय यूजिंग सम एंडोन्यूक्लियस, निक मीन इफ यू ओपन दिस सर्कल, this one is the circular DNA molecule, and if we treat it and we cut this circle at any given point, it becomes a nicked circle और निक्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। इसकी कन्फर्मेशन डिफरेंट होगी और जो लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी कन्फर्मेशन डिफरेंट होगी। दिस कन्फर्मेशन also affects on the rate of migration of the DNA through electrophoresis। Besides conformation and size, we have to pay attention towards the concentration of agarose, towards the current applied for the electrophoresis, the ionic concentration of the buffer, and the density of superhelical form 1। Now, under different conditions, these conformations they behave differently। अगर एक सेट कंडीशंस का है जिसमें आपने कंसंट्रेशन सेट की है, बफर की जो चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहे हैं उसको सेट किया है, तीसरे नंबर पे आपने जेल की कंपोजिशन या परसेंटेज को सेट किया है, उसमें फॉर्म 1 विल बी मूविंग स्लोली एज कंपेयर टू फॉर्म 3। और अगर इन्हीं सेट ऑफ कंडीशंस को हम चेंज कर देते हैं तो फॉर्म 3 विल बी मूविंग स्लोली एज कंपेयर टू फॉर्म 1। सो वी हैव टू लुक एट दीज सेट ऑफ कंडीशंस एंड द कॉम्बिनेशंस टू डिसाइड दैट फॉर विच फॉर्म और फॉर विच कंफर्मेशन विच सेट ऑफ कंडीशंस इज मोर गुड और मोर एक्सेप्टेबल। फिर हम बात करते हैं डीएनए को स्टेन करने के लिए वी यूज एथिडियम ब्रोमाइड। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, एथिडियम ब्रोमाइड इंटरकेलेट्स विद इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए।
And when it intercalates within the double-stranded DNA, it reduces the negative charge which is present on the double-stranded DNA. Ultimately, it increases the length of the DNA molecule. So, intercalation of ethidium bromide reduces the speed of DNA during electrophoresis, and this migration is reduced by a factor of 15%. Then comes the electrical current or the voltage, which is mainly responsible for the migration of the DNA molecule. At low voltage, the rate of migration of linear DNA is proportional to the voltage applied. Low voltage pe rate will increase if you gradually increase the voltage. But if you apply high voltage, then the molecules, the migration of the DNA molecules behaves differently. What actually happens there, that the effective range of separation in agarose decreases when you increase the voltage. There is a calculated way that if you have to do a DNA separation which is more than 2000 base pairs or 2 kilobases in size, then you should apply 5 to 8 volt per centimeter. Now, what does this volt per centimeter means? कल हमने बात की थी इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक के हवाले से. अगर हम उस टैंक को देखें जो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑपरेटर्स है जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं. और अल्टीमेटली जब टैंक के डिफरेंट साइजेस हैं तो उसके अंदर जो जेल कास्टिंग ट्रेस हैं उनके डिफरेंट साइजेस हैं. मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट दैट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द डीएनए लोडिंग to the end or second point of the DNA loading, what is the distance or what is the size of the tank, so that accordingly you can decide about the application of the voltage. And also keeping in mind, if you are working with the low molecular weight DNA or you are working with the DNA molecule which is more than 2000 bases in size. Then again we have different types of agroses. Some are standard agroses which are used normally in the lab for separation of the DNA. Under some specific conditions we have to use low melting temperature agroses, and sometimes we have to use intermediate melting or gelling temperature agroses which have both the properties of standard and low melting agroses. इनके हवाले से हम आगे चल के बात करेंगे. Electrophoresis buffer is made up of different salts. The concentration of salts matter in this case. If we use water in place of buffer, gel electrophoresis can be done, but the movement of or the DNA migration will be very slow. It will be reasonably very slow. But on the other hand, if we use very concentrated buffers, having very high salt concentrations, or ultimately those salts are going to give you high concentration of ions in the buffer, the migration rate will be reasonably faster, and that is going to produce heat which can be dangerous for the whole setup, because it can cause melting of the gel and it can cause DNA denaturation. Therefore, whenever you want to use buffer for electrophoresis, don't use very high concentration of the salts or very low concentration of the salts.